Very good morning to all of you. So today we are going to discuss about the difference in between oxygenic and anoxygenic photosynthesis. So as it name states, oxygenic photosynthesis क्या होगी? Photosynthesis that releases oxygen या फिर in other words you can say that during photosynthetic reaction somewhere oxygen generates or releases, right? In case of anoxygenic photosynthesis, as its name suggests, here in photosynthesis, oxygen does not release. तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या है कि भाई ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो, एनऑक्सीजनिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी. ये आप और क्लियर कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस रिएक्शन. दिस इज सिंप्लीफाइड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. आप देख सकते हैं CO2 वाटर के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल it is going to form, we know very well, glucose and molecules of water, and here you can see here oxygen is released, right? सो जैसे हमने पहले भी बताया आपको, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, राइट? वेयर एज एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में, एंड ये आप हमेशा याद रखिए, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो एक्चुअली कहाँ से मिल रही है बेटे जी? इस वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है? तो जो ऑक्सीजन जो बन पा रहा है वो कहाँ से बन रहा है? वाटर से. वेयर एज इन केस ऑफ एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आप क्या देखेंगे? हेयर वाटर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, यूजुअली इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड. तो यहाँ वाटर का यूज ना करके क्या यूज होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड. यहाँ वही आपका ग्लूकोज बनेगा, वाटर, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सल्फर मोलिक्यूल. क्या मिलेगा? सल्फर मोलिक्यूल. सो दिस इज द फर्स्ट एंड मेन डिफरेंस इन बिटवीन ऑक्सीजनिक एंड एनऑक्सीजनिक. ऑक्सीजनिक में जो वाटर का यूज हो रहा है और ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, एनऑक्सीजनिक में हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज हो रहा है और सल्फर रिलीज हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं. सो हेयर इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डोनर, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इट इज वाटर, राइट? बट इन केस ऑफ एनऑक्सीजनिक photosynthesis it may be hydrogen sulfide, hydrogen, ferric ions or other organic compounds. So here in this case byproduct is oxygen here, and in case of anoxygenic the byproduct is maybe sulfur or sulfate or other compounds. Here in case of oxygenic photosynthesis you will observe photolysis of water takes place during light reaction. Usually in photosystem second you will observe, further मैं आपको आगे बताऊंगी, 2 molecules of water will split to form 4 hydrogen, 4 electron and 1 molecule of oxygen. So here always remember, in case of oxygenic photosynthesis photolysis of water take place, whereas in case of anoxygenic no photolysis of water will take place, right? In case of oxygenic 2 photosystems are involved. You will further see in case of Z scheme, that is also called as light reaction. 2 photosystems are involved. First is photosystem second, that is P680, and second is photosystem first, that is PS700, right? But in case of anoxygenic only one photosystem is involved. Another difference, ऑक्सीजनिक के केस में जेड स्कीम प्रेजेंट है, वेयर एज इन केस ऑफ एनऑक्सीजनिक इट इज एब्सेंट. We talk about the photosynthetic pigments. Always remember, main pigment in case of oxygen photosynthesis is chlorophyll A. It is also the reaction center in case of oxygenic photosynthesis. Whereas in case of anoxygenic photosynthesis the pigment is bacteriochlorophyll, as it is always observed in case of prokaryotes, usually the bacteria. That's why the photosynthetic pigment is bacteriochlorophyll. Now let us discuss in case of oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthetic organism can be divided into 2 types. It may be eukaryotes or it may be prokaryotes, right?
यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स मेजरली और सम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं जैसे कि सियानोबैक्टीरिया। ये बहुत मेन क्वेश्चन है जो नीट और नेट दोनों में पूछा जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस can perform by both eukaryotes and prokaryotes, whereas anoxygenic photosynthesis is performed only by prokaryotes. Say for example is green and purple photosynthetic bacteria. If we talk about energy efficiency in case of oxygenic photosynthesis, as I earlier told you, the two photosystem are involved, second and one, so it has somehow higher energy efficiency, and in case of anoxygenic photosynthesis the efficiency is lower. So this is all about the difference in between two. Thank you.